नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज 3 फरवरी को पार्लियामेंट के बजट इजलास में सदर के खिताब पर बहस में हिस्सा लिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने कई मसाइल पर हुकूमत को घेरा। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर का आगाज मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग 60 साल की कमतरीन यानी सबसे लोएस्ट सतह पर आ गई है। मेक इन इंडिया का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने फोन दिखाते हुए कहा कि अगरचे हम ये कहते हैं कि ये फोन हिंदुस्तान में बना है, लेकिन इसके कल पुर्जे चीन से आते हैं और इसे हम यहाँ असेंबल करते हैं। हमने खपत पर तवज्जो मस्कूर की है, जिसकी वजह से अदम मसावत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि वजीर आजम ने मेक इन इंडिया के बारे में जो कुछ कहा है वो ख्याल अच्छा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के मामले में हम दुनिया से पीछे हैं, हम चाइना से भी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन उनकी कोशिश ठीक है, ख्याल दुरुस्त है, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चीन के मामले में फौज और हुकूमत के बयानात मुतजाद हैं, वो आपस में टकराते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का कहना है कि चीन हमारी सरहदों में दाखिल हो चुका है, जबकि नरेंद्र मोदी इस बात से, हमारे वजीर आजम इस बात से इनकार करते हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस में आज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की तकरीर, उन्हीं की ज़बानी। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक सुनिए। अंग्रेजी में राहुल गांधी की तकरीर है और उन्होंने वो सारी बातें की जो आज के हुकूमत की फेल्यूर है। नाज़रीन, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, शुक्रिया। So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we would do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open, is dynamic, and is accessible to small and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where a... Please. Without foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between 2 countries, and he is making an unverified statement about invitation of the prime minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir. LOP is giving us very, very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving... Leader of opposition has the information. So we would, from any official source, he must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers have visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So... I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये गलत बात है. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन को इस
इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। So we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. We cannot afford that the Chinese are at the forefront of this revolution. Number one. Number two, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters, and guide them on what a future, on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. Now, we talk about defense. And today, we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it. And the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it. And the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना। आप पानी। अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे। ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में आर्मी के पास अपनी मर्जी से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का बात बोल देते हो, सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये गंभीर मामले को आप ऐसा The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children,
for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by.